So good afternoon all and welcome to another live session of TechKnowledge Talk. So this is Vinit Narvekar and we are going to talk on access control configuration today. Yes, access control configuration. So here today the topic is very different because most of the people are demanding that we know the access control, but what exactly the access control system is we need to understand, and how this access control can get configured very easily. So today this is a session especially organized for all our viewers in TechKnowledge Talk on access control configuration. Thank you so much to all of you for joining again on this session. And here just want to give one more announcement for this TechKnowledge Talk is special going on with flash sale, that is 30% off on the products. The flash sale first is live now. You can go in the product section and check the flash sale. Yes, the flash sale फर्स्ट जो है ये स्टार्ट हुआ है. आप आपके प्रोडक्ट सेक्शन में जाके वहां पे उस फ्लैश सेल को चेक कर सकते हो. डिस्काउंटेड प्राइसेस आर अवेलेबल फॉर योर प्रोडक्ट्स. So very exciting news. At the start we have released the first flash sale on this TechKnowledge Talk, a special TechKnowledge Talk on access control configuration topics. So here all people are waiting and this time is now came over here and we are going to discuss more and more on the technology part. So what is the access control? What are the different kind of the function it provides? What are the application of this access control? That also we will discuss today. So this is just here we are getting the good kind of things where we are going to talk about the access control. Access control की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे functions हमें access control के मिलते हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे applications हैं. If you are talking to about the application part, अगर applications की बात करें, so what exactly the access control is? Okay, that we need to first understand. Where is the application you can use in the commercial buildings, in the offices, at the education segments or anywhere this kind of the access control can be get applicable, where you need to provide the access to the right people at the right place. So this is all about the access control. We will discuss about more and more deep. हम बहुत डीप में उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स वी हैव अवेलेबल विद अस इन एक्सेस कंट्रोल प्रोडक्ट कैटेगरीज. अगर देख सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल प्रोडक्ट कैटेगरीज वी हैव अ वन प्रोडक्ट अवेलेबल विद अस राइट नाउ. सो अलग अलग टाइप के एक्सेस कंट्रोल प्रोडक्ट्स आपके लिए वहां पे अवेलेबल है. यू कैन चेक दैट प्रोडक्ट एंड यू कैन गेट दिस all these facilities, all the functionalities available with this access control. So hope my voice is clear and everyone can able to read this, can able to understand what is the access control is, and you can able to view all this event which is going on live. So hope all people are getting connected one by one, and just we are waiting for the all our participants to get connected properly. And this is all this access control we are going to be basically it's quite interactive session and we are going to be discuss more and more this access control part. So most of the people are facing the network issue. Maybe I just request if you are getting any kind of the network issue, you can just go back and get connect again and you will get the best network available over here. And if there is a network, yes, you will get the live stream. So discuss कर रहे हैं हम access control configuration, but before that just want to inform you that a flash sale is live now and everyone can avail this flash sale. So that's why basically we have started this flash sale. Those who come join the session on time, for them this flash sale will get held. So everyone, all of you are connected with me and say if you are able to view me right now, the live streaming is going on. आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो please chat interaction में जाके वहां पे say hi to me. Please come on everyone, just type the hi in chat interaction and send the hi to me, so I will get understand everyone is connected with me right now on this TechKnowledge Talk live streaming session on access control configuration. So come on everyone, please type hi to me, so we'll get understand you all are people are connected with me and just we are on the start of the session. So hope everyone people are connected and they are directly live with me in this TechKnowledge Talk. Thank you so much everyone. Thank you so much Mr. Liaquat, Mr. Bablu Yadav, Mr. Saurabh Srivastava,
कैसे हो आप? Thank you so much for joining this technology talk. So apart from the different topics we have covered, हमने पुराने हमारे कुछ सेशंस में टेक्नोलॉजी टॉक्स में कुछ सीसीटीवी रिलेटेड टॉपिक लिए थे, बट नाउ एज पर द डिमांड, एज पर द पब्लिक डिमांड, वी हैव specially announced this topic on the access control configuration. So today we are going to discuss basically fundamentals of the access control. Access control system क्या है basically, ये हमें understand करना पड़ेगा. उसके बाद हम देखेंगे what types of the system components available in whole access control systems. Okay, then we will discuss about the connectivity. Yes, that's the most important part. Connectivity एक बहुत important part है. उसके अंदर हम different टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी, जो लॉक जो है एक्सेस कंट्रोल को बेसिकली अगर टर्मिनल को आपको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन से टाइप्स, कौन से पॉइंट्स वहां पे अवेलेबल है, वो भी हमें देखना जरूरी है. So that we will see and get the understanding of the connectivity part, and after that we will go and explore the range of the products which we have available with us. So different types of the terminals are available, कौन से मॉडल नंबर है, क्या स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर, ये भी हम देखेंगे. एंड उसके साथ साथ the most important thing is configuration part. Okay, so that we will explore what types of configuration, how many ways of the configuration available to do this access control system ready for your end user. So easy to way configure हमें करना है तो कैसे कर सकते हैं. I will just give you a brief idea through the presentation slide. We'll try to show some live how the software will look, how the access control basically configuration part will look, that also we can understand. And hope सभी लोग connected है and मेरे साथ, and the flash sale तो चल ही रहा है. Post flash sales बहुत सारे लोगों ने अवेल किया होगा, and hope you are connected with me, you can view me and you are able to listen whatever I am talking right now. If you are facing any kind of a network issue, just go back and join again this session on your mobile app. Definitely you will get connected with me on this live stream. So hope you all understand how the agenda of this today's access control configuration. So now we will talk through the presentation. समझते हैं कि fundamentals system access control की क्या है. What is the access control fundamentals? So here I will show you through a presentation first how the access control system fundamentals are there. So access control configuration समझने से पहले important है कि इसके fundamentals समझो. So through presentation I am going to explain you how the fundamentals of the access control. So if you are talking about the access control system, access control की बात करें, why we need access control system? We need to first understand why actually we need to access control system. So to give the authentication, to give the access of particular location, to give the place, a right people and the right time, that if we require to ensure, we need to use the access control system. So सही टाइम पे आपको सही दरवाजे पे या सही प्लेस पे सही पर्सन को वहां पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हैं. So if we are going to talk about the components, okay, what exactly access control system, तो मुझे पता चल गया कि क्यों यूज करना है. अलग अलग एंट्रेंस लोकेशंस पे, डोर्स पे ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में कनेक्ट कर सकता हूँ. बट उसके साथ साथ इसके साथ कंपोनेंट्स क्या आते हैं, what are the inputs, outputs of these access control systems are available, that we need to get understand. So if you're talking about the component part of the access control system, let's we will understand there are the three main components. First is the input, second is the controller, and third is the output. So बीच में जो controller है, it's heart of your complete access control system, where the input and the output is get connected. So इनपुट की बात करें तो वहां पे आपको मल्टीपल टाइप्स के आप रीडर्स कनेक्ट कर सकते हो. उस रीडर्स को आप एज कार्ड रीडर कार्ड शो कर सकते हो, पिन टाइप कर सकते हो. देयर इज अ बायोमेट्रिक रीडर आल्सो वेयर यू कैन जस्ट शो योर थंब, यू कैन शो योर फेस, डेफिनेटली यू विल गेट द एक्सेस. मल्टीपल टाइप्स ऑफ रीडर्स वहां पे अवेलेबल है. वो रीडर एज अ इनपुट आपके इस कंट्रोलर को कनेक्ट हो सकता है. Then a main part is that access controller. So there are the different types of the products we have available, different types of the products for the different application. First is the access controller, second is the standalone terminal, and third is the barriers. So अलग अलग टाइप्स के ये कंट्रोलर्स हमें अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशंस के हिसाब से. मूविंग टू द नेक्स्ट, आउटपुट की बात करें, इट्स एक्सेस कंट्रोल सिस्टम. सो डेफिनेटली वहां पे आउटपुट में एक लॉक का मैकेनिज्म तो रहेगा.
So electromagnetic lock or the electric strike lock, we can able to connect at the output. So this is a basically access control components की बात करें, ये सारे access control system है. Now to operate this system, to get the reports, how many people will get access, and to monitor the overall system, this whole system is connected with the client software. So that is a specialized software which helps to give you a complete report, how many persons came at your location, what the status of your door, it's open or closed, everything you will get it on this software. So all your access control system is connected with this software, and software can communicate and get the real-time events notification from your access control device. Hope you are able to view my screen. अगर आप मेरी screen देख पा रहे हो सभी लोग, and definitely you can able to understand me and listen me. Just you can type yes in the chat interaction. So hope I will get understand. Yeah, everyone connected and they are watching my show and this TechKnowledge talk. बहुत सारा knowledge हम लेने वाले हैं आज, बहुत सारी चीजें configurations के parts भी हम देखने वाले हैं. So this is all about the access control system. Access control की हमने बात की कि कैसे वर्क करता है, कैसे काम कर रहा है ये सिस्टम. So completely access control के component, input, out controllers, output and the reports. So हमने देख लिया कि ये access control basically क्या है. अलग अलग applications के locations पे आप लगा सकते हो, जैसे कि आपका कोई offices है, वहाँ पे entry हो है, especially वहाँ पे सभी person को allowed नहीं रहता है. Especially only for the staff of that particular office is allowed, where you can provide this access control system. So we have understand कि access control system basically क्या था, क्या क्या उसके अंदर components थे. But अभी देखते हैं कि overall system, एक complete system architecture जो है इस access control system का कैसे रहेगा. ये आपका सिस्टम है, दरवाजे के ऊपर कैसे बैठेगा, वहां से ही कनेक्ट होके आपका रीडर जो है वो कहाँ पे रहेगा. तो all system we will get understand through a system architecture on your screen. Okay, all right. So ये है आपके सामने access control system architecture. ये system architecture की मदद से आप देख सकते हो कि overall architecture of the access control system is possible, where all the access control terminal and access controller is connected. So आपके पास दो कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, जहां पे आपके पास एक कंट्रोलर आता है एंड सेकेंड आपके पास ये एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल आता है. सो हियर एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल की अगर बात करें, सिंपली यू कैन कनेक्ट ऑन द वन डोर. आप देख सकते हो कि एक ही डोर के ऊपर ये एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल आप कनेक्ट कर सकते हो. इस एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल को आप कार्ड शो करोगे या आप थंब शो करोगे, फेस शो करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द एक्सेस, योर डोर लॉक विल गेट ओपन एंड यू कैन एंटर इन दैट पर्टिकुलर रूम. दिस एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये विथ वाईफाई विदाउट वाईफाई भी आपके लिए अवेलेबल है. लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये मल्टी डोर कंट्रोलर है. अ सिंगल डोर, 2 डोर एंड 4 डोर कंट्रोलर्स में ये प्रोडक्ट आता है. तो ये एक्सेस कंट्रोलर है जिसको आप देखोगे लेफ्ट साइड में एक RS485 और वेगेंट के थ्रू आप अलग से रीडर कनेक्ट कर सकते हो. Right? So as per your project, as per your application, if there is a very big building or huge campus, or multiple doors are connected, you can provide an access controller. And if there is only a single door application, you can go for a standalone terminal also. So this all through a network will get connected to your client software. Okay, in client software you will get a report, a complete live status and a history of all your access control system. So hope this is access control system where we are connected and we can understand how the system will work, कैसा system architecture रहेगा. So system architecture की तो हमने बात की, यहाँ पे देखा कि एक दरवाजे के ऊपर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर इसके साथ साथ एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल है, जैसे हम फेस शो करेंगे दरवाजा आपका ओपन हो जाएगा, बट उसके लिए आपको आपका जो पर्सन का फेस है, आपका ऑथराइजेशन, ये पर्सन की डिटेल्स है, ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में ऐड करनी होती है. जब आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में ये ऐड करते हो तो कंट्रोलर विल गेट अंडरस्टैंड हु इज द पर्सन, देन यू रिक्वायर टू गिव द परमिशन. सो सिर्फ यही सिस्टम कनेक्ट करने की बाद बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको इसमें करने पड़ते हैं. बट नाउ वी विल फोकस ऑन द कनेक्टिविटी. सिंपल सा है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टिविटी नहीं है. आपके पास टर्मिनल है और आप लॉक को कनेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे कनेक्टिविटी रहेगी, इस टर्मिनल के पीछे कौन से पॉइंट है जो आप आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक को कनेक्ट कर सकते हो, वो देखना बहुत जरूरी है. आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू अ स्लाइड हाउ द कनेक्टिविटी विल बी.
सो जैसे कि स्लाइड्स में देखेंगे यस कि ये जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है जहाँ पे आपके ये एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल है, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल शो हो रहा है जिसके अंदर हम देख सकते हो कि ऑल द कनेक्टिविटी पॉइंट्स आर अवेलेबल एट द बैक साइड ऑफ द टर्मिनल। तो टर्मिनल को सबसे पहला 12 वोल्ट का एडाप्टर है, ये 12 वोल्ट का एडाप्टर इस एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हो। ये 12 एडाप्टर के पीछे अलग अलग टाइप्स के कनेक्शन है, जैसे नॉर्मली क्लोज, एनसी, कॉमन, नॉर्मली ओपन, सेंसर, बटन एंड ग्राउंड. There is a different kind of the wires with color code is available. Okay, so now I want to connect your lock, a magnetic lock with this access control system. How can I connect? So here we can see a 12 volt power supply will be required separately to provide to your lock. So basically a 12 volt का पावर सप्लाई है जिसका पावर सप्लाई का पॉजिटिव आपको V प्लस पे लॉक के V प्लस पे कनेक्ट करना है। ग्राउंड जो है उसका आपको व्हाइट पर्पल दैट इज नॉर्मली क्लोज मोड में अगर मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूँ तो NC में ये उसका ग्राउंड जो है मैं कनेक्ट करूंगा। देन व्हाइट येलो आई विल कनेक्ट द कॉमन टू द V माइनस ऑफ माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक। सो बेसिकली ये सिंपल लॉक कनेक्टिविटी यहाँ पे है, एक लूप में आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। कॉमनली नॉर्मली इस लॉक को ये पावर सप्लाई जो है ऑन रहेगा, पावर सप्लाई ऑन है तो लॉक ये क्लोज कंडीशन में रहेगा। जैसे ही कोई आप टर्मिनल पे पेज शो करते हो, कार्ड शो कर सकते हो, डेफिनेटली आपका जो पावर सप्लाई है ये कट ऑफ हो जाएगा और आपको लॉक में वहां से दरवाजे में एंट्री हो सकती है बिकॉज आपका जो लॉक है ये ओपन हुआ है। सो दैट वी हैव अंडरस्टैंड हाउ द कनेक्टिविटी विल बी इज देयर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको एंट्री वहां पे मिल जाती है, आप दरवाजे के अंदर से अंदर जाते हो बट दरवाजा बाद में लॉक हो गया, हाउ वी कैन कम आउट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एग्जिट बटन। आप देख सकते हो राइट साइड में बॉटम में वहां पे एग्जिट बटन है। एग्जिट बटन भी आप लगा सकते हो, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन कनेक्ट अनदर एग्जिट रीडर ऑल्सो। सो जैसे ये अंदर से कोई बाहर जा रहा है, दरवाजा क्लोज मोड पे है, कैसे दरवाजे को ओपन करें उसके लिए आपको एडिशनली एग्जिट बटन वहां पे लगाना पड़ेगा। सो दैट ऑल्सो वी कैन कनेक्ट। और बटन का पॉइंट है वहां पे आप देख सकते हो कि येलो ग्रे कलर का जो वायर है वो केबल आपके कनेक्ट होगा ये एग्जिट बटन पे एंड येलो ब्लैक ऑल्सो विल गेट ग्राउंड कनेक्टेड विथ योर एग्जिट बटन। So that is also important how we can understand how the connectivity is there. So पता चला होगा कि connectivity इसकी कैसी है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे दिख रहा है, that also is available with us. So हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कैसे कनेक्ट हो कर सकते हो आप। लॉक की कनेक्टिविटी है, मोस्ट प्रोबेबली आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो इस सिस्टम के साथ, दैट वी हैव अंडरस्टैंड। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट इज दैट how we can other connect a dual lock. कुछ डोर जो है ये सिंगल डोर रहते हैं, कुछ डोर है डबल डोर रहते हैं। सो मैग्नेटिक लॉक हम देखेंगे। मैग्नेटिक लॉक के अंदर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो लॉक के अंदर कनेक्टिविटी कैसे रहेंगे वो भी हम देख सकते हैं। सो थ्रू दिस देयर इज आर्मेचर प्लेट सेपरेटली अवेलेबल in lock. If you open the cover there is a different types of points are available, V plus V minus जो पावर और कंट्रोल लॉक स्टेटस वहां पे बताते हैं। NONC कॉमन जो डोर सेंसर्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका दरवाजा वहां पे ओपन कंडीशन है डेफिनेटली you will get the notification for that door is continuously open, that alert you will get it. So such kind of the lock connectivity, the lock body is available. Inside that there is a different types of the points are available as explained in the background. That kind of the that lock connectivity terminal से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो पीछे वाले स्लाइड्स में हमने ये देख लिया था। Hope you have understand all about the connectivity part कि कैसे हमने कनेक्ट किया है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस लॉक को आपके इस एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल से। So today we are more focused on the access control terminal where हम उसके अंदर की सेटिंग्स भी देखेंगे एंड कैसे कनेक्टिविटी है ये तो हमने देख लिया। ये टर्मिनल को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हमें देखना जरूरी है। सो उसके पहले हम देखने के लिए जाएंगे प्रोडक्ट के पार्ट। ओके, प्रोडक्ट्स कौन से अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है वो भी देखेंगे, फीचर्स कौन से हैं। एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल के अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग फीचर्स और कौन से फेस कैपेसिटी, कितनी फेस कैपेसिटीज के ये टर्मिनल्स आते हैं। सो वो भी हम देखेंगे। बट बिफोर दैट होप यू हैव कनेक्टेड विद दिस सेशन। मेनी मोर पीपल हैव अवेल्ड द फ्लैश सेल फर्स्ट। बहुत सारे लोगों ने फ्लैश सेल फर्स्ट एंजॉय किया, ले लिया था। सो प्लीज टाइप यस दोज हु अवेल दिस फ्लैश सेल फर्स्ट। फर्स्ट फ्लैश सेल किसने यहाँ पे लिया है, वहां पे कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया है, जस्ट टाइप यस इन योर चैट इंटरेक्शन
सो होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस फ्लैश सेल एज वेल एज द टेक्नोलॉजी टॉक जो चल रहा है यहाँ पे। हम नॉलेज ले रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं ये हमने देखा है, एंड कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स हम देखने वाले हैं। बट इसके पहले हम देखने चाहेंगे कि प्रोडक्ट कौन से हैं। तो दैट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो वी हैव अवेलेबल। नाउ लेट्स विल अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट की बात करें, सो प्रोडक्ट की रेंज क्या है, कौन से अवेलेबल है वो हम देखते हैं। सो वी आर देयर अप टू कनेक्टिविटी पार्ट। कनेक्टिविटी तो हमने समझ ली, कनेक्टिविटी कौन सी है क्या है। ना प्रोडक्ट की बात करें तो फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल्स, यस, अब फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल जस्ट आज का जमाना है, ये टचलेस एक्सेस सिस्टम का जमाना है। तो दैट्स व्हाई ऑल द these latest Minmoe series terminals are available with the functionality of the face recognition. So likely based on the AI technology, these terminals will work. A value face recognition series terminals is available. That model is starting as DS-K1T331. एक वैल्यू सीरीज का फेस टर्मिनल अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि 1000 फेसेस की कैपेसिटी है, 3.97 इंच का इसके अंदर टच स्क्रीन वहां पे आता है। लेस देन 0.2 सेकंड के अंदर ये फेस रिकॉग्निशन ड्यूरेशन, दैट मींस परफॉर्मेंस बहुत हाई है। जस्ट आप आओ, फेस को शो करो और विद इन अ क्वाइट ऑफ सेकंड्स इट डेफिनेटली रिकॉग्नाइज योर फेस एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ योर। सो लाइक में बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका। फेस एंटी स्पूफिंग जो मदद करता है आपका लाइव फेस, ह्यूमन पर्सन का ही फेस डिटेक्ट करने का काम करता है। और ये फंक्शनलिटी आपको इस प्रोडक्ट्स में मिलती है, जहां पे कोई भी आके आपकी फेक अटेंडेंस वहां पे मार्क नहीं कर सकता। नो वन कैन शो जस्ट पिक्चर ऑफ योर फेस एंड गेट द एक्सेस। लाइव फेस डिटेक्शन का काम ये फेस एंटी स्पूफिंग फंक्शन वहां पे आपको प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ time attendance status also you will get, that is check in, check out, break in, break out, and everything you will get it over here. So Hik Connect ऐप के जरिए कनेक्ट कर सकते हो, IPMS 4200 के जरिए आप कनेक्ट करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बहुत ही खासियत बात करोगे, वॉल माउंट या डेस्कटॉप माउंट इजीली आप रख सकते हो। सो लाइक वेट दिस इज अ वैल्यू सीरीज फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल, ये जो आपके लिए अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की, दैट इज another product we have available, that is a DS-K1A340 series. So और एक है compact face recognition terminal है, but if you require the need of only and only attendance, you will have this product. So face anti spoofing और mask detection है। आपके अगर मास्क नहीं पहना है तो ये डिटेक्ट करेगा, face anti spoofing जैसी फीचर्स ये प्रोवाइड करेगा। बट उसके साथ साथ आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे फेस की कैपेसिटीज, फिंगर की कैपेसिटीज वहाँ पे देती है। So for example 1500 faces is the capacity. और fingerprint की बात करें 3000 fingerprints you can enroll. So 2 megapixel का wide angle कैमरा आपको मिलता है, just we have to connect and definitely it will capture a good quality image. So attendance चाहिए, just डेस्क के ऊपर आपको रखना है या वॉल के ऊपर माउंट करना है। कॉम्पैक्ट सा एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, DS-K1A340 series। उसके बाद अगर बात करें कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा अवेलेबल है, so yes we have available K1T343 compact face recognition terminal है, same feature है, but yes it's not only the attendance, okay, more and more that feature you will get it access control terminal plus the attendance. So it act as access control also, you can connect the lock as well as you will get the attendance reports and everything with this terminal. So लाइक पे आप देख सकते हो, आप थंब आपको शो करके वहां पे अटेंडेंस मार्क करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ मुझे फेस शो नहीं करना है, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन चाहिए, मैं कार्ड शो करना चाहता हूँ, यस मैं फेस शो करना चाहता हूँ, आई वांट टू जस्ट गेट द एक्सेस फ्रॉम द थंब, देन आल्सो इट इज पॉसिबल। सो एक एडवांस डिवाइस है, मोर एंड मोर द सिक्योरिटी लेवल इज अवेलेबल। 4.3 इंच का टच स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलता है। सो गुड प्रोडक्ट, कॉम्पैक्ट डिवाइस है, कॉम्पैक्ट्स में आपको अच्छा सा फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल ये प्रोवाइड करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स है। A value face recognition series terminal, that is a K1T341. So that product is also available. You can understand the 3000 faces are there, and apart from that there is a 1500 card, 1500 fingerprints is available. 0.2 less than 0.2 second में आप उसको चेक कर सकते हो, and face recognition very fast. So very best product, and here just want to inform you all right now the flash sale. Okay, second flash sale is live now. आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके प्रोडक्ट्स मेनू में जाओगे ऐप के अंदर, so flash sale 2 है, हम प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, but right now the flash sale 2 is active. प्रोडक्ट के अंदर जाओ, आपको ये प्रोडक्ट्स वहां पे मिल जाएंगे जो डिस्काउंटेड अमाउंट है
फ्लैश सेल 2 स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे लोग जो है कनेक्टेड है, ऑल द पीपल दोज हु आर कनेक्टेड एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द फ्लैश सेल इन द फ्लैश सेल 1 first flash sale. They're not able to get the product. You can get the product right now in second flash sale. Come on everyone, flash sale 2 is on now. You can go in the product section, check वहाँ पे products available है. If there is a discounted amount, you can get this product right now in this live technology talk. So hope everyone is connected with me and they are understanding about this, how the technology is working, how the access control system is there, how the fundamentals of access control की हमने डिस्कस किए. कनेक्टिविटी की बात करें तो स्पेशली जो लॉक कनेक्टिविटी है वो भी हमने देखा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक के साथ इस टर्मिनल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट इट एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट. सो सिंपल सा छोटा सा टर्मिनल अवेलेबल है आपको, अलग अलग टाइप में आप कनेक्ट कर सकते हो. वॉल माउंट है, डेस्कटॉप माउंट है. अटेंडेंस के लिए सिर्फ टर्मिनल चाहिए आपको, लिए अटेंडेंस के लिए भी अवेलेबल है. एक्सेस कंट्रोल प्लस अटेंडेंस चाहिए था उसके लिए भी टर्मिनल आपके पास अवेलेबल है. एंड द एंड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट that also will helpful with more face capacity, more fingerprint capacity, which provides the work of the access control as well as the attendance. So hope everyone are viewing this technology talk and getting some kind of the knowledge with the access control part. And products वहाँ पे हम discuss कर रहे हैं. products के ऊपर flash sale 2 है, वो भी start हुआ है. आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाके इस फ्लैश सेल को चेक कर सकते हो. डिस्काउंटेड अमाउंट इन डिस्काउंटेड प्राइस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर यू इन दिस फ्लैश सेल. सो नाउ वी विल डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट प्रोडक्ट की. तो हमने बात की कि प्रोडक्ट कैसे है, हम कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट को हमने चेक किया वहाँ पे कि क्या क्या फीचर्स इस प्रोडक्ट्स पे हमें मिल रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपैरिजन की बात करें कि प्रोडक्ट सिलेक्शन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो सिलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हमने अलग अलग प्रोडक्ट के मॉडल नंबर वहाँ पे देखे. बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हाउ मेनी पर्संस ऑफ एक्सेस यू नीड टू प्रोवाइड फॉर पर्टिकुलर एंड यूजर. क्या आपकी वहाँ पे कैपेसिटी पर्सन की 1000 है तो आप 1000 फेस वाला या उससे बिलो वाला वहाँ पे डिवाइस आप प्रोवाइड कर सकते हो. If there is a 1500 capacity, you can provide the terminal according to your requirement. So right now, we are discussing today about the value series access control terminal, जहाँ पे 3000 faces capacity तक ये terminal आपको वहाँ पे provide हो रहा है. So it's a good, interesting features we have available. आप देख सकते हो कि अलग अलग स्क्रीन के इंचेस में ही आपको मिल जाता है and it supports all kind of the functionality for you. So access control को हमने देखा, समझा. We have understand what exactly access control, the fundamentals of this connectivity, magnetic lock के साथ उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि प्रोडक्ट हमें वैल्यू सीरीज में फिलहाल कौन से मिल रहे हैं. एंड होप पीपल हैव एंजॉय द फ्लैश सेल 2 ऑल्सो. जिन्होंने फ्लैश सेल 2 जिनको मिला है, जिन्होंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं फ्लैश सेल 2 में, सो प्लीज टाइप यस इन दिस कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली जस्ट वांट टू नो कितने लोगों ने इस फ्लैश सेल को अवेल किया है, वो भी मुझे पता चलेगा. देखते हैं कि कैसे है. बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया फॉर दिस टेक्नोलॉजी टॉक एंड गेटिंग अंडरस्टैंड हाउ द टेक्नोलॉजी टॉक इज एंड व्हाट आर द एक्सेस कंट्रोल फीचर्स वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड. सो फीचर्स की बात करें, बहुत सारी फीचर्स हमने इस पार्ट में देखे कि जैसे कि एंटी फेस स्पूफिंग, मतलब जहाँ पे लाइव ह्यूमन का जो फेस है, जो लाइव फेस है, वो ये फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल रिकॉग्नाइज करता है. सो मोर एंड मोर दिस ऑल एंड टेक्नोलॉजी फंक्शंस तो बहुत है बट उसका कॉन्फ़िगरेशन की इम्पोर्टेंट है. सो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जैसे ही ये प्रोडक्ट आप कनेक्ट करते हो, कनेक्टिविटी होने के बाद आपको ये प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा. So for that, if you are going to see the configuration part, अलग अलग वे से इस प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज अ K1T सीरीज टर्मिनल, एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल. आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट जैसे ये बॉक्स में से निकालते हो, यू रिक्वायर टू गिव द 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू दिस. एंड एज आई सेड, एज आई एक्सप्लेन, यू कैन कनेक्ट द लॉक to this particular system and definitely at the initial stage this device will be in inactive status. Okay, इनएक्टिव स्टेटस मोड पे रहेगा. तो आप सिंपली इसके पीछे नेटवर्क पोर्ट है, नेटवर्क के ऊपर आपको इस डिवाइस को कनेक्ट करना है या डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन यू कैन डायरेक्टली दिस डिवाइस यू कैन एक्टिवेट इट बाय गिविंग द पासवर्ड. सो सिंपली आप पासवर्ड देके डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हो एंड इजीली यू कैन एक्सेस दिस डिवाइस एंड यू कैन ऑपरेट दिस डिवाइस. सो शुरुआत की बात करें
ये डिवाइस के अंदर अगर हम बात करें कि डिवाइस के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, बस एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 192.0.0.64 इसका डिफॉल्ट आईपी एड्रेस रहेगा। आप नेटवर्क पे कनेक्ट करके इस डिवाइस को नेटवर्क से एक्टिवेट कर सकते हो, नंबर 1 ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करके। नंबर 2 आप SADP टूल से इसको एक्टिवेट करके पासवर्ड दे सकते हो। एंड नंबर 3 यू कैन डायरेक्टली गिव द एक्टिवेट दिस डिवाइस थ्रू दिस टर्मिनल इटसेल्फ। सो इसकी बात करें तो आपको अगर इसके मोड में जाना है, मेनू में जाना है, जस्ट आपको एक आपका जो फिंगरप्रिंट है ये टच करके रखना पड़ेगा और वहां पे राइट साइड में जब आप स्क्रॉल करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द मेनू कॉन्फ़िगरेशन। बट फॉर दैट यू रिक्वायर टू एंटर द पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस। सो पासवर्ड अगर आप डालते हो और इस पर्टिकुलर डिवाइस पे आप एंटर होते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द मेनू लाइक दिस। I can understand nobody is possible to view this entire menu. कैमरा के थ्रू आप नहीं देख पाते. So that's why through presentation I will show you important settings of this particular whole configuration. तो जैसे ही डिवाइस को ऑन करते हो, नंबर 1 एक्टिवेट करना है उसको, उसके बाद बहुत सारे फंक्शनलिटी हमें मिलती है जैसे कि यूजर है, एक्सेस है, देन कम्युनिकेशन है, बेसिक्स है, बायोमेट्रिक्स है। सो यूजर के अंदर आप जाते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, टर्मिनल तो है आपने कनेक्ट किया बट आप यूजर की इंफॉर्मेशन उसको नहीं देंगे तो ये कौन से इस यूजर को एक्सेस वहां पे प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड यू गेट द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर, टू एनरोल द फेसेस, एनरोल द पर्संस इन दिस पर्टिकुलर टर्मिनल। सो लाइट में आप यहाँ पे यूजर के अंदर जाने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे कि प्लस साइन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो अब सारी जो इंफॉर्मेशन है ये मैन्युअली इस टच स्क्रीन के जरिए टाइप करके आप यहाँ पे यूजर को ऐड कर सकते हो। So there is a simple setting, user option is available. You can click on the add user, you can go inside this and you can make entry of your person. So person को add करना, user को add करना, ये important settings है. Then there is a one more settings of the access controls. Okay, so before that communication is also important. Now the device is connected. If you want to give the IP address through this device itself, there is a communication setting. Go in the communication menu, provide a DHCP or the manual IP address which is required. So आपका जो device है network पे connect होगा. Then in that communication only there is a HikConnect setting is available. You can enable that setting and you can directly connect this device over the cloud, over the HikConnect platform. So लाइट में मल्टीपल सेटिंग्स और अवेलेबल है। RS-485 और वेगन कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पे सेटिंग जो आपको दी है, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट योर सेटिंग्स। So बहुत सारी settings है, settings are different kind of setting, but I will explain you the some important settings through presentation. What are the settings are there which is most important for you to directly operate this device terminal through your menu of your access control terminal. So बात करें यहाँ पे first of all user को add करना important. Device को activate कर पाओगे आप directly आप इस रिकग्निशन टर्मिनल के मेनू के अंदर पासवर्ड डाल के आप एंटर हो जाओगे। देन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेटिंग दैट वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट इज दैट ऐड यूजर। यूजर को वहां पे आपको ऐड करना है। सो हाउ वी कैन ऐड द यूजर, दिस इज अ फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड। जस्ट लॉन्ग टैप ऑन द इनिशियल पेज। ओके, इनिशियल जो पेज है उसके ऊपर लॉन्ग टैप करें 3 सेकेंड्स तक एंड जस्ट स्लाइड टू द लेफ्ट और द राइट बाय फॉलोइंग द जेस्चर टू एंटर द एडमिन लॉगिन। So लाइट में you can just टैप करो, राइट में स्लाइड करो, आप एडमिन लॉगिन पेज पे आ जाओगे। देन यूज द डिवाइस पासवर्ड, आपको डिवाइस का पासवर्ड वहां पे एंटर करना है, जो भी आपने एक्टिवेशन के टाइम पासवर्ड दिया था एडमिनिस्ट्रेटर, ये पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है। यू रिक्वायर टू ऐड द डिवाइस पासवर्ड, डेफिनेटली यू कैन एंटर इन द होल मेनू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर डिवाइस। मेनू की बात करें, सो यूजर मैनेजमेंट इज देयर, ऐड पर्सन, डेफिनेटली यू कैन ऐड द यूजर, सो यू कैन ऐड द पर्सन, his face picture and also add your faces and you can provide the ID number for that particular face. Then if you want to enroll the card, then also you can enroll the card for that particular person. So user management ये another steps है. How you can do that? Click on the plus sign, okay, then these are the all setting. First of all you need to employee ID, you need to enter the employee ID. एम्प्लॉय आईडी डालना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे आप एम्प्लॉय का आईडी, मतलब जो भी है आपका एम्प्लॉय का आईडी अगर उस कंपनी ने स्टाफ ने प्रोवाइड किया होगा तो वो आप एम्प्लॉय का आईडी वहां पे डाल सकते हैं। सो दीज आर द ऑल काइंड ऑफ द सेटिंग्स यू कैन परफॉर्म ओवर हियर एंड दिस ऑल काइंड ऑफ द एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। जैसे आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी डाला, देन आपने नाम टाइप किया, नाम के बाद आपने वहां पे कार्ड जो है
5 कार्ड आप एक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन के लिए दे सकते हो। और देन उसके बाद फिंगरप्रिंट की बात करें, 10 फिंगरप्रिंट फॉर पर पर्सन यू कैन एनरोल ओवर हियर। सो जहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि कितने फिंगरप्रिंट, कितने कार्ड जो है ये वहां पे एनरोल किए हैं। देन उसके साथ साथ वहां पे फेस भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फेस कॉन्फ़िगरेशन करके टच करके वहां पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जस्ट टर्मिनली आपका जो डिवाइस है वही आपका फेस कैप्चर करके डायरेक्टली इट कैन बी मेड। So like where all the settings we have available over here, हमने सेटिंग्स की बात करें कि फर्स्ट मेनू में यूजर को ऐड करते वक्त कैसे सेटिंग करनी है। जस्ट फेस को ऐड कर रहे हो, आपको ये स्क्रीन आ जाएगा, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। क्लिक ऑन द कैप्चर बटन, व्हेन यू क्लिक ऑन द कैप्चर बटन योर कैमरा विल कैप्चर द फेस एंड इट विल गेट रिकॉर्डेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। Then administrator permission, yes, if you click on the administrator permission, you can set this particular user as an administrator or you can set it as a normal user. अगर आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर यूज किया तो अगर आपको इन फ्यूचर इस पर्सन के लॉगिन के थ्रू आपको डिवाइस में एंटर करना है, डिवाइस के मेनू कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, you can definitely go inside of this. So for that you can set this user a parameter that is a administrator permission is required or not. Now next setting after the user permission we have understand the access control permissions. Okay, that is most important settings है। मेनू के अंदर से अगर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बात करें तो आपको ECS या आइकॉन के ऊपर वहां पे टच करना है। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वहां पे, जैसे टर्मिनल ऑथेंटिकेशन मोड। Okay, so how the terminal will work? Terminal will work on the authentication of only by showing the face, or you require any option, either face, either card, either fingerprint. Any person can show anything. Terminal will get authenticated of your main functionality, or your main person can get authenticated. If you require this functionality work only with the face, yes, face show करना है, उसके अलावा बाकी का कुछ शो करेंगे तो आपको authentication नहीं मिलेगा। You can change that mode over here in this settings. ये सेटिंग में आप ये चेंज कर सकते हो। इनेबल NFC कार्ड, राइट नाउ वी नो एवरीथिंग, वेयर इज द लेटेस्ट कार्ड इज अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड एज अ NFC कार्ड। एक वाईफाई कार्ड जैसे हम यूज करते हैं बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे वगैरह आप कभी स्वाइप करते हो। सो क्रेडिट कार्ड्स टाइप के भी कार्ड्स अभी NFC कार्ड टाइप में आ रहे हैं। वैसे टाइप का अगर कार्ड आप यूज करते हो, यस यू नीड टू इनेबल दिस NFC कार्ड फंक्शनलिटी, दैट कार्ड आल्सो यू कैन यूज। So door contacts, yes, you can select the door contact setting. It's normally open or the normally closed according to your requirement. You can set this setting. Open door duration की बात करें तो जैसे ही आप एक्सेस शो करें, whenever you will get the access, your door lock will get open. You will get the entry in that particular room. So how much time maximum your door will get open? 5 seconds is ideal time. You can place it over here. So open door duration, if you require more time over here, you can set the more time from this particular setting. So access control parameters हमने देखे मेनू के अंदर की configurations के। Then moving to the next, a biometric setting which is most important. So if you are going to consider about this kind of the menu, these are the some important settings which we are discussing today. Application mode, wherever you are connecting your terminal, it's in the indoor or it's in the outdoor, according to you set the application mode of your device. So based on that, it properly adjusts the requirement which is helpful for getting a successful face recognition. As per the actual environment, it will definitely, this terminal will work. Then face liveness level, if you are enabling the face and this will definitely, these settings will helpful for you. Face recognition interval, whenever your face recognition is happening, how much interval you require to put बिटवीन द टू फेस रिकॉग्निशन। कभी कभार ऐसा होता है कि फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल हमने लगाया है और बहुत सारे पर्सन इस टर्मिनल के सामने आते हैं, ऑथेंटिकेशन होता है, कंटिन्यूअसली ऑथेंटिकेशन होता रहता है। सो डू यू रिक्वायर टू कीप सम काइंड ऑफ द गैप, अ टाइम गैप बिटवीन द टू ऑथेंटिकेशन और द टू फेस रिकॉग्निशन? डेफिनेटली दिस सेटिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इन सेकंड्स यू कैन कीप सच काइंड ऑफ द सेटिंग्स। So eco mode in the normal, this camera will, this particularly terminal will work in supplement light also, as well as this will work in a night vision mode, that is a IR mode also. So lightweight, this eco mode is help to give you all kind of the setting to work with the IR cameras. So बहुत सारी सेटिंग्स से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी सेटिंग है, बट बाय डिफॉल्ट वी रिकमेंड टू इम्पोर्टेंट जस्ट कनेक्ट द इम्पोर्टेंट सेटिंग, इनेबल द इम्पोर्टेंट सेटिंग एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग योर डिवाइसेस। सो बायोमेट्रिक सेटिंग की बात की, उसके बाद IBMS 4200 क्लाइंट सॉफ्टवेयर। बट IBMS 4200 क्लाइंट सॉफ्टवेयर तो हम देख रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर से हम ऑपरेट कर सकते हैं, डिवाइस को ऐड करके कॉन्फ़िगरेशन तो हम कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट,
where you required to do either this menu configuration, but apart from that the main USP की बात करें इस टर्मिनल को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करने की, इजी वे में कॉन्फ़िगरेशन करने की, क्योंकि जैसे मेनू मैंने शो तो किया, but somehow most of the people are not comfortable to operate the menu and go inside the settings. So for that, this particular terminal you can directly access on your web browser also. सो वेब ब्राउजर के ऊपर भी आप इस पर्टिकुलर टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हो, और जो सेटिंग्स मैंने अभी आपको बताई, द सेटिंग्स व्हिच आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ, सेम सेटिंग्स इज एप्लीकेबल, सेम सेटिंग्स आप ब्राउजर के थ्रू इजी वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दैट आल्सो पॉसिबल. सो वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट सेटिंग्स आल्सो, ब्राउजर के थ्रू इजीली कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है हम देखते हैं. बट उसके पहले जस्ट वांटेड टू नो एवरीवन, hope you all are connected and with me, and just want to know कि इंडिया के कौन से रीजन से आप मेरे साथ कनेक्टेड हो. प्लीज टाइप योर नेम ऑफ द सिटी. जस्ट वांट टू नो कहाँ से आज लोग इस एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन सेशंस के लिए कनेक्टेड है. कम ऑन एवरीवन, प्लीज टाइप योर नेम ऑफ योर सिटी इन द चैट बॉक्स. So I will get understand, yes, people are connected with me and they are interacting with me. This is a live session, streaming is going on. Access control configuration हमने देखा कि क्या फायदे हैं उसके, कहाँ यूज हो सकते हैं, कौन से फीचर्स हमें अलग अलग टर्मिनल्स के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स कौन से एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो. सो पीपल आर स्टार्टिंग द टाइपिंग द मैसेज. वन ऑफ द आवर गेस्ट इज कम फ्रॉम द बैंगलोर. Thank you so much, sir, for typing this. And one of the person from Mumbai, Mr. Sanjit Kumar, okay, from Bihar. Welcome, Mr. Sanjit Kumar. Okay, from Trivandrum. Okay, from the south. Also, there are lots of people from Tamil Nadu. There is one more partner is connected with us. Sri Ram Computers. MP say Sri Ram Computers. Yes, congratulations. Thank you so much, sir, for joining this session. Nagpur, yes, from the Nagpur also the people are connected. From the Gujarat also the people are connected. From the across India, everywhere you connected. Thank you so much for joining this session. Access control configuration की हम बात कर रहे थे. Access control configuration का टर्मिनल के थ्रू हमने configuration तो का. We have understand this kind of the something kind of a difficult, but now web browsers के ऊपर देखिए. So here I will try to explain to show you how this access control terminal will work over the browser. अगर ब्राउजर की बात करें वहां पे, सो ब्राउजर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हमें मिल सकते हैं, वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल है. बट उसके साथ साथ ये ब्राउजर्स को कैसे हम यूज करें वो भी इम्पोर्टेंट है. सो लाइक में इस ब्राउजर के थ्रू अगर आप जाते हो तो लॉगिन करते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एंटर द आईपी एड्रेस ऑफ योर टर्मिनल. आपके टर्मिनल का जो आईपी एड्रेस है ये आपको एंटर करना पड़ेगा, और वो आईपी एड्रेस एंटर करने के बाद यू नीड टू चेक हाउ द browser will work, how this particular system will work. So we will try to get this show of the browser if possible. I will try to explain you how the things will work. Okay. All right. So hope you can understand. You can get my screen now. So here I will explain you now how we can access this over the browser. So browser की बात करें, so जैसे कि अपना हमारा ये टर्मिनल है जो आप शो कर सकते हो इस ब्राउजर के ऊपर. आप देख सकते हो हाउ द सेटिंग्स आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंट सेटिंग्स एंड द पैरामीटर्स आर अवेलेबल विद दिस पर्टिकुलर टर्मिनल. अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स आप ब्राउजर के ऊपर देख सकते हो. एंड इस ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर के ऊपर सबसे पहले लाइव व्यू, यूजर्स, सर्च एंड द कॉन्फ़िगरेशंस, ये टाइप्स के मेनू वहां पे आपको मिलते हैं. So most probably जो configuration में आपको बता रहा था, the configuration which I am telling you, this configuration of all these particular product, this configuration of all these settings are available in the configuration page. So configuration की पेज की अगर बात करें तो वहां पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर अलग अलग टाइप के configurations वहां पे अवेलेबल है, जो all the configuration which is available inside this same can be with. So it's act as your IP cameras, जैसे कि आप ब्राउजर्स के ऊपर कनेक्ट करते हो और उसको एक्सेस करते हो. Same kind of the settings are available. So there is advanced settings, basic settings and network settings you can provide. So for example in network settings की बात करें, so here you can provide your IP address. Okay, if you require to change the IP address, you can change it from over here and you can show this IP address. यहाँ पे IP address की settings आप कर सकते हो. उसके साथ साथ advanced level पे जाओगे, if you are going for the advanced, there is a platform access. Now
your device is connected ideally on the Hik Connect application, you will get it on the Hik Connect. But there is a multiple locations and there is only a normal internet public IP address is available, and you need to connect this to your devices with a central platform. Okay, on this time you can use the ISUP protocol or platform access mode. So जिसकी मदद से आप मल्टीपल आपके लोकेशंस के रिमोट लोकेशंस पे ये जो एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल्स कनेक्ट किए हैं आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आपके सेंट्रल प्लेटफॉर्म के थ्रू. So that configuration is available. You just need to enter the server address, a key, a device ID which is provided for this particular device. So apart from that, if you're going to see basic just video audio options are available. Then apart from that there is a audio. Yes, audio settings are there. Do you require a voice prompt? जैसे आपने शो किया फेस, आपको कुछ voice message इसमें से आना चाहिए. अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा है, you can disable that voice prompt from this setting also. So likewise, these are the some many more settings are available with this access control terminal. Then apart from that, if you're going for the image, yes, these are the image. It's a live view. You can get it of this access control. How we can see the live view? We can check and you can record this camera. If you add this camera directly in your NVR, it will act as your camera also. So live view parameters also you can adjust it from over here. But there is a brightness, contrast, saturation settings are there. But important setting is a supplement light. So supplement light is the most important. This light will help you capture the image at the night time. So आप देख सकते हो कि नाइट टाइम में, अभी तो नाइट है बट नाइट टाइम में आउटडोर में लोकेशंस पे कनेक्टेड रहता है ये टर्मिनल. इन दैट टाइम इफ यू रिक्वायर टू गेट दिस प्रॉपर एक्सेस, प्रॉपर व्यूइंग ऑफ योर फेसेस, यू रिक्वायर टू जस्ट गेट इट लाइव ऑन. सो लाइक ये सप्लीमेंट लाइट है जो मैंने कनेक्ट किया है. ये सप्लीमेंट लाइट है, आपका ऑन हो सकता है. सो लाइक पे आप देख सकते हो कि सप्लीमेंट लाइट जो है ये यहाँ पे मैंने ऑन किया इस डिवाइस का लाइट में. सो ये लाइट आपका काम करता है, सप्लीमेंट लाइट आपके फेस के जो है अच्छे से कैप्चर करने के लिए, क्योंकि फेस का इमेज अगर प्रॉपर्ली कैप्चर करना है तो वहां पे लाइट होना बहुत जरूरी है. सो दिस सप्लीमेंट लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो यू कैन एडजस्ट इट from the settings of your browser, and definitely this type of settings we have available with this browser. So browser के ऊपर से उसकी intensity कम कर सकते हो. अगर आपको supplement light की जरूरत नहीं है, you can off that supplement light. If you want to schedule this supplement light, okay, as per the time, that also you can schedule. The options are available for you in the browser settings. So configuration की हम बात कर रहे हैं access controls की. सबसे पहले device का configuration देख रहे हैं. तो जहाँ पे हमने देखा कि ये सारी settings वहाँ पे available है. All these settings is available for you. You can do it according to your requirement. So like way you can select the brightness, you can adjust the brightness, you can schedule these settings like disable, on and schedule. 3 options are available. Timing के हिसाब से आपको on करना है. You can get the start time and the end time accordingly. It will start and get off. So like way ये important setting हमने देखी. Then उसके बाद अलग अलग settings है. कुछ important setting की बात करें, that is the access control setting. By default you just require to keep the setting here, but the important settings I will show you. You need to set it as a main card reader or the sub card reader. That also you can use it sub card reader जैसा भी इस टर्मिनल को आप यूज कर सकते हो. So सेटिंग में और इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे कि मैंने शो किया था सेम ऑथेंटिकेशन मोड. ओके, व्हाट ऑथेंटिकेशन मोड यू रिक्वायर? Do you want to change the mode only for the fingerprint? You can change it only for the fingerprint, only for the card, or different kind of the combinations. You can set it from over here. So by default, we are keeping card or face or fingerprint, which is ideal mode is available. So these are the just important settings are available for the access controls, and you can definitely will get the access for these particular settings. So बहुत सारे settings है, जैसे कि working mode है इसका. परमिशन फ्री मोड रखना है. सिंपल सा बहुत सारे लोकेशंस पे जस्ट वांट टू शो द फेस, डोंट वांट टू गेट टू ओपन एनी डोर एंड यू कैन गो ओवर देयर, योर रिकॉर्ड्स विल बी गेट मैच ओवर देयर. यू कैन सेट इट एट द परमिशन फ्री मोड आल्सो. सो लाइक वे देयर आर द मल्टीपल एप्लीकेशन एंड फीचर्स अवेलेबल. फेस एंटी स्पूफिंग ये भी एक फीचर है, यहाँ पे आप इनेबल करोगे. हाउ यू विल गेट द फेस एंटी स्पूफिंग मींस इट विल डिटेक्ट ओनली द लाइव फेसेस. नोटिस पब्लिकेशन, just you require to add one particular image over here. just कोई भी आप JPG image करो, add करो. whenever the access control terminal is a normal mode, okay, so कुछ टाइम के बाद अगर कोई face आपके शो नहीं कर रहा है, it will go in the silent mode and this particular image will get pop up as a theme on your screen. so that kind of the notification also एक screen saver जैसा notification आप यहाँ पे provide कर सकते हो. So this is all about the basic configuration setting parts of the web configuration. Now I want to announce that Flash Sale 3 is now started. Come on everyone, go in the product section and check the Flash Sale 3.
एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन चल रहा है हमारा, फ्लैश सेल भी चालू है, फर्स्ट फ्लैश सेल हो गया, सेकंड फ्लैश सेल हो गया, राइट नाउ द फ्लैश सेल 3 इज नाउ, कम ऑन एवरीवन, गो इन द प्रोडक्ट सेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन में आप जहां पे टैप करोगे वहां पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे दिख जाएंगे, वो प्रोडक्ट्स कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट में वहां पे अवेलेबल है, यू कैन टच एंड यू कैन अवेल दिस प्रोडक्ट, यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट नाउ ओनली। सो एवरीवन, K1T 331 जैसे ही विद वाईफाई विदाउट वाईफाई वाले ये ऑप्शंस की अवेलेबल प्रोडक्ट्स की रेंज है, K1T 343 प्रोडक्ट इज आल्सो अवेलेबल। सो मिनिमम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल है, बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो, फ्लैश सेल चल रहा है, टेक्नोलॉजी स्टॉक भी चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स हम कैसे प्रोडक्ट्स को ये यूज कर सकते हो, कैसे एप्लीकेशंस की यूज कर सकते हो। So hope everyone is enjoying this session and they can interacting with me, and still they have connected with me live for this technology talk, and you are getting the all idea about the access control की बात करें तो access control की settings के अंदर जाके हमने configuration का part तो check किया, but ये सारा configuration जो है, जो अभी तक मैंने बताया आपको, these all are related with the device configuration। डिवाइस के अंदर जाके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के मोड आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके रिलेटेड ये था। बट द मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, व्हाई, बिकॉज यू नीड टू प्रोवाइड द परमिशन फॉर दैट, you need to assign the particular templates, you need to assign the particular person access for the particular domain. So software configuration is also most important part. I am trying to explain you through a slides how the software configuration will be available for you. So जैसे ही देखते हैं हम on the screen, we'll talk about the software configuration, which kind of the software is available. Okay, so I will show you the screen for the software configuration. Okay, all right. So software की बात करें तो IBMS 4200, IBMS 4200, this is a particular client software we have available. This IBMS 4200 which comes with a separate access control version also, as well as one access control software will comes with the whole package. That is, you can add the normal CCTV cameras, encoding devices, you can add the access control, you can add the video intercom also. But if there is a requirement at the site or specially to use access control system, you can go for the IBMS 4200 access control version. So like 50 access points you can provide over there, 2000 users can meet supports, and many more functions and features are there, like a person, access control, time attendance, event centers and monitoring. All other features are available. बहुत सारे features इसके अंदर आपको provide हो जाता है. So let's we will discuss the one by one. एक के बाद एक देखेंगे कि क्या क्या ये फीचर्स हमें मिल रहे हैं. So first you need to select the wizard. Access control software जब आप चालू करेंगे तो how it will look, you need to go in the wizard options. So wizard की बात करें, wizard will definitely guide you to get particularly guide you how you can go to step by step आप कैसे जा सकते हो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, कैसे कॉन्फ़िगर वहां पे कर सकते हो, कैसे एक्सेस कंट्रोल का फंक्शंस वहां पे आप यूज कर सकते हो. सो लाइक वे दिस इज ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल. हम देख सकते हैं कि कंप्लीट विजार्ड को जैसे ही लॉग इन करोगे इस सॉफ्टवेयर को, इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा IBMS 4200. जस्ट लॉग इन. There is on the right side bottom there is a operation wizard where you will get the wizard for the access control. Likewise, for the access control menu, if you are going to see persons, access control, time attendance, monitoring, and event center, these all the functions you will get it. So for the beginners, we recommend click on the access control wizard. This wizard will guide you to go the step by step and configure the features. So when you click on the wizard, it will gives you some kind of the functions. Step by step कैसे जाना है, how you can go ahead. So that also we will discuss step by step. When you click on the access control wizard, so first there is a mode, that is the settings. Okay, some important settings you need to go. Whenever you click on the import export, that means if you are setting, if you are doing all kind of the settings, the backup, to take the backup is more important. So go in the configuration part, a system import configuration file. This is the option is available for you. Then also you can do the auto backup of your configuration. You can schedule the auto backup also. So before going in the settings options of this access control, these are the some important settings which is alerting to you. A basic function. Then device arming, in the same settings on the top side, if you get the menu of this, if you click on that, there is a system option available. Then there is a tools option available. When you click on the tool, there is a device arming. Okay, the device arming control
you should require to enable your device. So once you add your device, the device arming in the device arming control option, your terminal should be always enabled. Then and then only your terminal will give you a notification and the information of all event to your software. So ये जो settings मैंने बताई ये important है. Wizard की बात करें, हम Wizard में गए थे. In Wizard also there is a lots of settings are available, but important setting के बारे में हम discuss कर रहे हैं पहले. सबसे पहले हमने import configuration file को देखा, how we can import it. Then arming control is most important setting, how you can enable the arm of these devices. Then if you are going to see a time synchronization, device add कर रहे हो या device को कुछ settings से access control permission दे रहे हो, timing is important. So your laptop and your device time should be a match with each and every one. System time and the device's time should be a match. So that's why you can click on the batch time synchronization. Multiple devices, if you're connected on the network, it will get synchronized with the proper timings. So that is an important setting. So batch time synchronization settings हमने देखी. उसके बाद हम देखेंगे yes. When you go in the Wizard के आप अगर enter अंदर करोगे तो Wizard के अंदर अलग-अलग options आपको वहाँ पे मिल जाते हैं. First of all, left side में top में देखोगे, there is a device options you have available. Then there is a person option, then template, access group, and the monitor. So like where many more options are available for you, a device, template, and access. Step by step कैसे जाना है ये important है. So first of all, the first step is that you need to add your device in software. That is the first step you need to follow. So that's why click on the Wizard. You will get this 5 icons. In 5 icons, the first choose the device icon. Click on the device. When you click on the device, you will get the option of device adding. So जैसे कि ये device adding option आपको ऑनलाइन आ गया है, वहाँ पे आपको बॉटम में वहाँ पे ऑनलाइन डिवाइसेस, if your devices is connected over the network, you will get the all online devices over there. Just select any kind of the device and click on add. You can add device directly in your software. So before adding the device, you require to provide the name for the device, the username and password for particular device. Then only you can successfully add. So activation करना आपके device को बहुत important है before adding this elements. If your device is not active, you can activate. So this is the first setting which is important setting. I explain you. Online device के ऊपर आप click करोगे, आपको network के ऊपर connected device मिल जाएगी. You can easily add. Also there is a 2 important settings: synchronize time and import to group. Synchronize time and import to group. These important settings are available. जिसके अंदर से आपको ये settings के ऊपर टिक मार्क रहना बहुत जरूरी है. तो ये device successfully properly आप add होके आपको directly configurations का सारा जो पेज है, सारे जो device है, ये function properly यहाँ पे show हो सकता है. So now group device add to group. यहाँ पे options available है, हमने टिक मार्क की थी. So this device will act as a one particular group. It's get added in a particular group, and you will get the view of all the doors which is available for this particular device. So there is the access control terminal is there, one at the exit, one at the enter. So these kind of the options you will get it if you're connecting the multi-door, a 4-door controller, 4 doors पे वहाँ पे 4 doors के options वहाँ पे available है उस controller को. So आपको चारों doors वहाँ पे दिख जाएंगे. So all these devices that you are adding, just check it, verify it's get added properly in the group or not. Then remote configuration, okay. Just click on the device. आपको device online मिलेगा वहाँ पे. You will get these online devices. Then there is a one more settings option icon is there. If you click on the setting icon, you can open the remote configuration directly. So if you require to on the supplement light or if you want to do any kind of the changes directly in the device, आपने डिवाइस को सॉफ्टवेयर में ऐड किया, थ्रू सॉफ्टवेयर यू कैन डायरेक्टली गो इनसाइड द सेटिंग्स एंड कैन डू एनी काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस. So like way you have done this particular system maintenance or any other settings also. Then one more option is there available, device status. When you click on the device status, you will get that your door is open or closed. There is a controller status is proper working or not. Or what is the card reader status, what is alarm status, everything you will get it on this menu. So device status है, device settings में जा पाएंगे, आप device status में जाके इस सारी settings को देख सकते हैं. So this is kind of the software features we are getting understanding over here कि software के अंदर अलग-अलग settings क्या है. So we have followed this first step. First step हमने देखा, just simply add your device. Device हमने add किया. Now we are going to add the organization, add or modify the organization, or we can add the person in that particular organization.
So by default, there is an organization is there, one particular name of the company will be there. If you want to create a sub department in that particular organization, you can create the sub department, and you can also add the persons over here. So we will follow, we'll check the next step, that is how we can add the persons. So persons add करने की अगर steps की बात करें तो वहां पे सबसे पहले persons के ऊपर आपको क्लिक करना है. You need to click on the person in the wizard. Then there is an option you will get add. Okay, click on the add option. You will get these settings. The pop-up setting you will get where you can type a person name, person ID, person name टाइप कर सकते हो, मेल फीमेल है चूज करना है, और सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है. So the same options we have seen over here in this particular menu of your device, same kind of the things you will be get over here also. But the advantage is that you can get the more access of directly add the spaces, add the card from remote devices. So here in the screen you need to click on the plus sign where you can directly capture the photographs of your, you can upload the photograph image, you can directly capture your face from your laptop camera, you can directly capture your face from terminal itself. So like where many more settings are available, that settings also you can perform, and you can get these settings, you can add this card, a number will get over here. So like where these are the settings for the person adding, यहाँ पे आपको person add करने हैं. After that, card adding options are the important, where you need to check the card type. Is a normal card you want to keep, a duress card, verified duress card, the door will open, at the same time client software will receive alarm notification. Such kind of the card type you want to choose, you can choose that particular card as a duress card type. A patrol card is a reserve card over there. A dispatch card stop the buzzer triggering by just by the alarms. That's type. Different types of cards are available. Usually for the employee authentication, we suggest you to choose the normal card and add this person. कार्ड जब अगर आप ऐड कर रहे हो, so for that there is a card issuer separately available. You can connect it as well as card readers के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली आपने ये टर्मिनल कनेक्ट किया है उसके थ्रू भी आपका ये कार्ड रीड कर सकता है. After that, fingerprint, person adding is the settings हम देख रहे हैं. Fingerprint also, yes, you can choose particular device, you can select the same device from the network and you can just simply keep your finger on the sensors. ये जो sensors है उसके ऊपर आपको finger रखना है and it will recognize your pattern of your thumb, and definitely your finger will get stored and get added for this particular person. So this is the settings where it collect the fingerprint from your access control terminal or the fingerprint issuer. So you need to require to select a proper device from where you are going to register your fingerprint. So this is more important settings we have seen. Add face information, just select it particular terminal and you can click it, open it, and directly your face can be get added through your terminal, or you can add the face through upload image also. Whenever you are doing the face enrollment, just want to explain you some important settings that that face angle should be a proper. You have to keep eyes, you have to focus your eyes directly in camera. So like way you can keep a straight over there on particular camera and properly in 640 by 480 pixels ratio you can capture your faces. So there is some just notification rules and don'ts we need to show you how you can avoid the wrong face detection, face capturing, and how you can avoid the wrong face images storing directly whenever you are trying to capture the live faces. So like there is a deflection angle more than a 10 degrees, you require to avoid it. Backlight too dark, बहुत सारा ब्राइटनेस आउटडोर में जब आप कनेक्ट कर सकते हो पीछे से बहुत सारा ब्राइटनेस आता है, उस वक्त या बहुत ही डार्क लाइट है उस टाइम पे उस लोकेशंस के आप कैमरास में आपके टर्मिनल में आप सेटिंग कर सकते हो और अवॉइड दैट काइंड ऑफ द लोकेशंस. One side overexposed, you can avoid it, a face to be expanded. So that is important things you require to consider while you are enrolling your faces. So properly proper locations पे 0.5 meters के सामने टर्मिनल के सामने खड़े रह के स्ट्रेटली आपको कैमरा के अंदर आपके आईज के थ्रू देखना है, and then definitely your face position will get captured properly. So the get persons directly already if it is added in devices में कुछ already किसी और लोकेशंस पे लगा था, बहुत सारे persons वहाँ persons already कुछ added है, उनको आपको सॉफ्टवेयर में ऐड करना है. Definitely you can choose that and get data from your devices. So that also get imported all the faces information, personal information directly
from devices, different kind of the devices. Moving to the next, templates. Okay, templates in बात करें, all the templates, authentication templates is available at 24/7 for the all day it will work. But your organization will work from morning 10 a.m. to evening up to 6 p.m. Then accordingly you can choose the template. You can choose the week schedule as well as you can add the holidays also over here. So holidays है जैसे 15th August है, so like way you can select to mark the holidays over here. You can completely create one particular template and like way you can apply this template for your access control permissions. So these are the settings. आप देख सकते हो कि template के अंदर आप ये holidays की और all day templates की settings choose कर सकते हो. Moving to the next, access groups. Okay, now it is important to choose a template, select a person and access group applied to this particular access group. Access group is one particular group where all the devices is get connected. So for example, the persons are belong from a sales team, a persons are belong from a sales team. So all the sales team persons will get the access of particular door only or particular terminal only. So where you require to first choose the persons, आपको person choose करना है. Then you require to select the available door. इन particular persons को कौन से doors पे वहाँ पे permission चाहिए and then you would require to apply it. So like way you can get this, apply this permission directly of person to particularly devices. That access group you can allot it for that particular persons. And then that's it. If you go on the monitoring option, okay, just monitoring options पे जाके आपको उस पर्सन के फेस को शो करना है. You will get the access directly open and you will get the access of your door. But before that, there is a permission you require to also apply for this. So these are just the basic settings we are checking over here. How the monitorings will happen, how the permission will work, and how we can apply these settings to particular access groups also. So here we are discussing, हम देख रहे हैं कि monitoring हम कैसे करें. Configuration के through हम देखेंगे, but before that we'll try to get understand how the software will work. हमने देखा कि persons add किए, persons add करने के बाद वहाँ पे उस persons को हमने face दिया, fingerprint दिया या card दिया. Then after that we created over there templates. Okay, after that we can apply the person to particular access group. So like way there is options we have available. जैसे कि हमने देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ये टर्मिनल मेरे पास है और इस टर्मिनल के जरिए भी हम इस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू डायरेक्टली द सॉफ्टवेयर, हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक. कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स की बात करें तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स अवेलेबल है, दैट आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर. सो आई एम हियर ट्राइंग टू शो यू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑल दिस सेटिंग्स. कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. जैसे कि हमने जो शो किया सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग ऑप्शंस थे, अलग अलग सेटिंग्स वहां पे थी. हाउ द सेटिंग्स विल लुक ओवर देयर, हाउ यू कैन ऐड द डिवाइसेस, that also possible. So I am trying to show you this kind of some basic settings available for this access control terminal. तो उसकी बात करें तो सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं, so lots of features are available. जैसे कि हम एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर परमिशंस हम देते हैं, तो परमिशंस के अंदर अलग अलग फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है. सेटिंग्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर है IBMS 4200 जो यहाँ पे आपको यूज करना है. IBMS 4200 के जरिए आप इस डिवाइस को सबसे पहला ऐड करना है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड थ्रू सॉफ्टवेयर यू कैन डायरेक्टली गेट द लाइव व्यू ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एज आई एक्सप्लेन. सो जैसे कि हमने बताया कि ये सॉफ्टवेयर हाउ इट विल वर्क, कैसे काम करता है, कैसे सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टैंड विद दिस IBMS 4200. सो IBMS 4200 कहाँ से डाउनलोड करें. इफ यू विजिट ऑन द हिकविजन वेबसाइट, हिकविजन की वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करोगे, so there is you will get the version IBMS 4200 normal, which can be help you for adding for the CCTV cameras and any other devices. Apart from that, if you require to go for the separately access control version, there is options available IBMS 4200 AC for all of you. So like way these are all the functionality available है, उस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो. hikvision.com पे जाओगे, वहाँ पे सॉफ्टवेयर सेक्शंस पे आपको ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे मिल सकते हैं. सो नाउ सेटिंग्स की बात करें, इफ यू आर गोइंग टू मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट, आई एम ट्राइंग टू शो इफ पॉसिबल द सेटिंग्स
related with the IBMS 4200 software. So 4200 software की अगर बात करें, yes, this is a live software which I am going to explain you. ये सॉफ्टवेयर की बात करें तो दिस विल बी द लुक लाइक द सॉफ्टवेयर. आप पर्सन ऐड कर सकते हो, डिवाइस ऐड कर सकते हो, टेम्पलेट्स पे जा सकते हो, एंड देन ऑल्सो यू कैन गो इन द एक्सेस ग्रुप. सो जस्ट आपको लॉग इन करना है सॉफ्टवेयर, यू नीड टू रिक्वायर टू लॉग इन दिस सॉफ्टवेयर, एंड देन यू कैन गो इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑप्शंस मेनू लाइक डिवाइस, पर्सन, मॉनिटरिंग. So all which I explain in the PPT, same kind of the options are available. So now one by one quickly we are trying to get if I able to add my device or not. So like this device की बात करें, device के options पे आप वहाँ पे आए. So after that we can click on the add, okay, where you will get this device to add the online device या manually. अगर device manually आपको address add करना है, so IP address देके आप devices को add कर सकते हो. Now we are trying to get the online device. We can trying to add this device online to add in this software. So if you are trying to get this add, there is an add button is available. Okay, this is the add button. You can type the username or particular of device or password of the device. If you require to give the admin device, or you can devise any one kind of the name, you can provide this. So like way I can provide this terminal name over here, and I am trying to add this. Yes, my devices simply get added in my software. आप देख सकते हो मेरे सॉफ्टवेयर में ये डिवाइस सिंपली मेरा ऐड हो चुका है. And simply just you can get this device added in your software, and you will get this understanding of how you can easily add this device. So basically मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर तो डिवाइस ऐड किया, जस्ट डिवाइस के ऐड करके सारे परमिशंस आप देख सकते हो. सो जस्ट दिस इज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन हाउ यू कैन ऐड. पर्सन के अंदर भी आप जाओगे, इफ यू रिक्वायर टू ऐड द पर्सन, just all the option you will get it over here, where you can type any kind of the ID for that particular person. If you require, you can type the name for that particular person, and you can add the faces from over here. So like this, upload the faces, take photo, or remote collection. These all the options are available. So if you're going for the remote collections, and if you're able to take the device, you can capture the faces from the device itself. So like the face is collected, device से face capture कर लिया है, live face is captured. So like way I can ensure I can add the card also. So like way, first of all you need to do the setting which card reader is available. I am showing my live devices. Like way मैंने मेरा live devices वहाँ पे choose किया है, and I can try to get the card ready. So मेरे पास एक कार्ड है, मैं just show कर रहा हूँ. I just show my card. It's read the particular card number. I can add this. Easily मेरा कार्ड भी ऐड हुआ है. Simply I can add the person. Then after that just you can add this. So मैंने कार्ड ऐड किया, मैंने face ऐड किया. You can simply add this device. So like way, these are the settings are available in the configuration menu. Hope you can understand how the settings are there. You can easily add this card. You can easily check this all features which is available over here. And simply I added the persons to मैंने add किए. And now the next setting if you are going to focus is that one device add किया, person add किया. Now template, we have a 24/7 template is selected. Okay. By default 24/7 templates available. Then after that access group, which is most important settings. So where you require to give the authentication, you require to give the access group, where you require to go in the access group settings, where I can click on the plus sign. Okay, I can type over here sales department access group I require to provide. Then you need to choose the person. मैंने मेरा नाम person create किया था, मैंने ये पर्टिकुलर डोर को जो मेरे पास टर्मिनल है उसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ. देन जस्ट आई वांट टू क्लिक ऑन द सेव. सो दिस गिव योर सेटिंग्स एक्सेस और ग्रुप इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो पर्टिकुलर पर्सन को वो पर्टिकुलर एक्सेस वहां पे प्रोवाइड हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. नाउ व्हाट यू वांट टू डू. So we have selected this group. We have selected this particular access group. Now it is required to apply this all the settings you have done it in the software. You require to apply this to device. So you can do this apply all to the devices. आप apply कर सकते हो सारी permission
This all the permissions will get applied to particularly device. All the permissions get applied. So that means persons will get directly directly applied. All information and the access permission will get directly applied to this particular. So like when device, person, template, access group, ये 4 step हमने finish किया. So now the next step is that monitoring, where you can open the door manually, you can show your face and you can get the door access. Like when authenticated, I show the face and all the faces authentication will get. So you can see on the screen authentication result will getting, and you can manually open, lock. If you want to unlock the door, you can unlock the door also. So the door is open, door is closed, everything you can do this manually, all the settings is possible. So whole real-time data also you will get it through software, and you can get this all setting and configuration through this software. So basically this software will help you to do the all settings related with all parameters. Okay, in device also you can make the settings. In also if you don't want to make the settings in device, then you can make the settings directly through the software, through the browser. That also possible. So here we are getting understand how the access control basically works. So जैसे कि हमने देखा, simply just when a device add किया, a person enroll किया, person add किया, then I applied the permission, I created the access group and I give you authority of particular person for particular door. जैसे ही मैंने मेरा face show किया, तो face register था मेरा, it's get yes face is authenticated करके आया, वहाँ पे आपको screen के ऊपर monitoring पे live show भी हुआ कि आपका door जो है वो lock हुआ है. If you want to operate it manually, you can lock and unlock door. So just simply I enrolled my face, I show you how it can be get easily open and get the access. And if you want to show your card, show your fingerprint, that also possible. So card के through show कर रहा हूँ, face के through show कर रहा हूँ, I will get the easily access on this terminal. So how it is quickly, very easily you will get the understanding of the access control configuration. Hope you have understand. जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट कौन से थे, फीचर कौन से थे, आप एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल को मेनू के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, ब्राउजर के थ्रू उसके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, एंड सॉफ्टवेयर जो है ये आपको सारी परमिशन देके आपको एक एक्सेस कंट्रोल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. So this is all about the access control configuration, and hope you have understand. So if session is really good, if you like it, please like this session. Please keep in the chat box, comment in the chat box if you really like this session. And this is all about the access control configuration. So thank you so much to all of you. सभी लोग जो connected हो इस टेक्नोलॉजी टॉक पे बहुत टाइम से, thank you so much for understanding all the configuration settings and all the configurations related things for this particular access controls. So this is from my end today. If we are going to talk for the next upcoming technology talk, definitely we will talk more and more on another topic, latest technologies, features, solutions and configuration. So that's all about from my end. This is Vinit Narvekar taking goodbye to all of you. Thank you so much for joining this session. Thank you so much.